Honorable Election Commissioner Shri Anup Pandey ji on my right and Shri Arun goel ji on my left, Shefali ji, senior officers, friends from media. Through your medium, I first of all, in this press conference, want to welcome you all और आपके माध्यम से असम के सभी नागरिकों को हम सबका नमस्कार और अभिनंदन। जैसे कि आप सबको विदित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत असम की असेंबलीज और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट की। इस प्रोसेस के अंतर्गत कमीशन ने असम के दौरे के विभिन्न स्टेक होल्डर्स को कंसल्टेशन करेंगे ऐसा डिसाइड किया और ड्राफ्ट प्रपोजल प्रिपेयर करने से पहले ही उनको डिस्कस करेंगे, उनकी सारे व्यूज लेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया। अधिकांशतः जो कमीशन हैं वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसको पब्लिक डोमेन में डालने के बाद उस पर 1 महीने का ऑब्जेक्शंस या सजेशंस मंगाने के बाद विजिट करते हैं, लेकिन हमने एक बार पहले और एक बार उसके बाद भी करेंगे ताकि प्रोसेस को और ज़्यादा पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव और सबकी सहमति से कर सकें एंड वी कैन मेक इट मोर इंक्लूसिव, मोर पार्टिसिपेटरी। So that is why we decided to go fast. कमीशन सभी स्टेक होल्डर्स की सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल कंसर्न्स को सुनकर और यथासंभव एज फार एज पॉसिबल उनको इंटीग्रेट करते हुए, उनको समावेश करते हुए ही डिलिमिटेशन जैसी क्रिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ेगा। हमारी अप्रोच, हमारी जो आने वाली कार्यशैली है डिलिमिटेशन की, that we would be always talking to the stakeholders, we'll be doing it with transparency, इसी को रिफ्लेक्ट करती है और प्रदर्शित करती है। फ्रेंड्स, राजनीतिक दल लोकतंत्र में मतदाता के अपने संबंधित समूह का, व्हाटएवर कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रुप्स दे रिप्रेजेंट, का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे महत्वपूर्ण इंटरमीडिएरीज होते हैं। दे आर वेरी क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स इन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आल्सो, हैविंग विजडम एंड पल्स ऑन द ग्राउंड टू हाईलाइट क्रिटिकल इश्यूज एंड फीडबैक। एंड इन एडिशन, द सिविल सोसाइटीज, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेक होल्डर्स, संगठन, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। लास्ट 2 डेज में कमीशन ने 9 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटीज और सामाजिक एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिनकी संख्या लगभग 60 के बराबर थी, और पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल एंड रीजनल। उनके सबके विचारों को हमने बहुत ध्यान से सुना है, नोट किया। इस दौरे में आने से पूर्व सभी राजनीतिक दलों, संगठनों या जो हमसे मिलना चाहे उसके लिए हमने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दिया था, उनको आमंत्रण भी दिया था। वी इनवाइटेड देम ऑल दैट इफ whosoever wants to meet us can meet us, take time. So recognized national and state parties जो हमसे मिली, उनमें just to report through you, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, असम गण परिषद, AIUDF, Bodoland People's Front, United People Party Liberal, and 3 more registered political parties, namely Assam Jatiya Parishad, Lok Raksha Party, and Raizor Dal, also met the commission and submitted their representations. असम राज्य के विभिन्न दूर दराज क्षेत्रों से, काफ़ी दूर से, जो भी लोअर असम, अपर असम, नॉर्थ साउथ से लगभग 60 सिविल ऑर्गेनाइजेशंस और सामाजिक संगठनों ने कमीशन से मुलाकात की और अपने सुझाव हमारे सामने रखे। इन संगठनों में मुख्यतः बोडोलैंड ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट्स यूनियंस, विभिन्न समुदायों जैसे तिवा, गोरखा, अहोम, अनुसूचित जाति, मोरौन, विष्णुप्रिया, मनुपुरी, मैती, गारो आदि के समूह भी शामिल हैं। टी पीपल्स फोरम, वेरियस सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, जातीय संसद, साहित्य सभा तथा महिला संगठनों ने भी अपने सुझाव कमीशन के समक्ष रखे। और ये सभी संगठन अक्रॉस दी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द असम है, जो अपर असम, लोअर असम, नॉर्थ एंड सेंट्रल असम, हिल एरियाज, प्लेन एरियाज, सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो वी हैव बीन एबल टू गेट वेरी गुड सजेशंस एंड कमेंट्स ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द स्टेट। आपके माध्यम से इन सभी पार्टीज को, सभी संगठनों को हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमें बहुत ही मतलब जो बहुत ही उनके दिल के मुद्दे थे वो हमें बताए, जिसको हम नोट कर सकें। और एंड लेट मी एडमिट दैट देयर सजेशंस हैव ग्रेटली हेल्प्ड अस, very greatly it has helped us. It has improved our understanding of the issues which are involved in the exercise which are taking a critical and a very complex exercise. इस बीच में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स
और चीफ सेक्रेटरी और स्टेट के सीनियर सेक्रेटरी से भी बात की, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। और इसमें मुख्य बात ये थी, हमने जो डीएम्स डीसीज को कही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे मिलने नहीं आ सके, दे मे नॉट हैव ए क्रिटिकल मास टू हैव कम टू अस। तो ऐसे लोग जो हमारे पास नहीं आ पाए हैं तो उनके पास आते हैं, तो उनके क्या उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनकी क्या सोचना है, ये अपने माध्यम से हमारे पास पहुँचाएं। So these have been directed to that, to channelize the aspirations and the expectations of people who have not been able to come to us. So friends, अब आप जानना चाहेंगे कि जो लोग हमसे मिले उन्होंने मुख्यतः क्या क्या कहा। तो I want to report again through you what have been the broadly suggestions of the representations which we have received. I am just naming a few major ones, not going into individuals. उन्होंने कहा कि आप सेंसस 2001 की पॉपुलेशन फिगर्स क्यों ले रहे हैं, इसके बदले में लेटेस्ट सेंसस फिगर्स कीजिए, ये दिस वाज वन सजेशन। फिर ये भी एक सजेशन था कि आप जो अभी असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर फिक्स रख रहे हैं, तो इस नंबर को बढ़ाने की क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं, व्हाई आर यू कीपिंग दिस नंबर्स कांस्टेंट एंड व्हाई दिस कैन बी इंक्रीज, नॉट एवरीबडी। एंड लेट मी आल्सो टेल यू दैट दीज सजेशंस आर हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग एंड competing claims, some were in favor, some were in against, but I am saying these were the issues on which people spoke. So some said 2001 is okay, some said it is not okay. Some said that it should be increased, some said that let us continue in the present system. Then people invariably asked for adequate representation of SCs and STs constituencies. There was one suggestion which said that lower Assam, जहाँ पर जनसंख्या की कम वृद्धि हुई है और एरियाज के मुकाबले में, वहाँ उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एसी पीसीज में 30% वेरिएशन का प्रावधान होना चाहिए, इसको बढ़ाइए ओनली इन अपर असम। देन ये भी प्रश्न लोगों ने पूछा और कहा कि ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो 2008 में बंद हुई थी, तो इसको आपने क्यों तुरंत से शुरू किया। फिर delimitation already due in 2026 across the country, आसाम delimitation आप क्यों कर रहे हैं 2026 के बाद, क्यों नहीं कर सकते। No constitution of separate delimitation commission as was done in J&K, तो why election commission is doing it। हो सकता है ये सब प्रश्न आप लोग भी पूछने वाले हों मुझसे, जिनको मैं पहले ही अपने से लिस्ट कर रहा हूँ और जवाब भी दूंगा इनका। Then impact of delimitation exercise on the 6th scheduled area and how do we kind of reconcile these concerns. And कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि कोई ड्राफ्ट तो पहले से ही बन के तैयार है और वो ड्राफ्ट सब में घूम रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो पहले से बन गया और या पहले से कोई पुराना ड्राफ्ट है। People talk about some draft which is in circulation that it will happen, this will be reserved, this will not be reserved, this is what will happen. So I thought these are the major issues through which what others said. There were other representations which were very specific to the constituencies, that reserve this constituency for us, give us the representation, merge this block with this block so that our regional aspirations can get proper expression in the political process. So those I am not discussing, those are individual things, this will become very large. But these were broadly the issues which were raised. So friends, मैं अब इन बिंदुओं का जवाब भी आपको देने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के फैक्चुअल डिटेल्स और हाइलाइट्स से आपको अवगत कराऊँ। I want to emphasize and assure all of you, and through your medium, which is a very powerful medium and which is actually the only medium for us to reach to the masses, that we will consider with great care and with due consideration all the suggestions which have been received by us, and as far as possible कानूनी दायरे में रहते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी के तहत सभी सजेशंस को डिलिमिटेशन प्रपोजल में समावेशित करने का, इंक्लूड करने का, जगह देने का, एकोमोडेट करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे, बिल्कुल सिंसियर प्रयास करेंगे। The consultation
let me admit here and emphasize, during the entire process would be the key. Disclosures and consultation. So that इतने दिन के बाद जो एक्सरसाइज हो रही है ये सबको पता रहे, कोई रूमर्स की गुंजाइश ना रहे और सबकी भावनाएं और बातें हमारे पास तक पहुंचती हैं। हम खुले दिमाग से with open mind we will consider all of it. So now I'll after this try and give answers to what questions have been raised. So first of all about why not a separate delimitation commission and why Election Commission is doing it. So friends, as you are aware, असम का राज्य का परिसीमन डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत डिलिमिटेशन द्वारा डिफरमेंट ऑर्डर को निरस्त कर दिया, मीनिंग thereby that the delimitation exercise can start. The jurisdiction of the commission. Why not delimitation commission? Why the commission? The jurisdiction of the commission has been triggered by the 15th November 2020 request and letter of the Ministry of Law and Justice to start the process of delimitation under Section 8A of the Representation of Peoples Act. So Section 8A of the Representation of Peoples Act prescribes and provides that Section 9(1) and read along with Section 9(1)(c) and D of the Delimitation Act mandates the Election Commission of India to do the exercise of delimitation for the 4 states here, as and when it is so mandated and as and when the deferment is described. And in this case, this trigger happened when the Ministry of Law wrote to us on the 15th November 2022. Section 8A was inserted with a particular objective, and the objective was that whenever the situation becomes normal, the Election Commission can complete the process of delimitation, and constitution of a separate delimitation commission for this purpose may not be necessary, because it has happened in all other parts of the country. Therefore, wherever it is remaining, this specific section was inserted. And Section 8A provides, I will just quote this: if the President is satisfied that the situation and the conditions prevailing in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur or Nagaland are conducive for the conduct of delimitation exercise, he may by order rescind the deferment order issued under the provisions of Section 10A of the Delimitation Act 2002 in relation to that particular state. So in relation to the state of Assam, this order has been rescinded, and therefore we have started our exercise. And language of subsection 2 says that as soon as maybe after the deferment order in respect of the state is assigned under Section 1, the Election Commission may by order determine the number of constituencies within the state. And therefore, ECI is exactly working on the responsibilities assigned to it under the existing legal framework. The second major question was as to why 2001 and why the seats are not increased. Friends, इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एक्सरसाइज है ये एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस के अंतर्गत है और इसके बिना हो भी नहीं सकती. It has to have a very strong legal base. Article 171 of the Constitution of India provides for the basis of census year. This is the Constitution article which provides for the basis of census year and readjustment of seats, the number of assembly and parliamentary constituencies will remain the same. Let me read this relevant provision for you. Article 170
subclause 3. Upon the completion of each census, please mark my word, each census, the total number of seats in the legislative assembly of each state and division of each state into territorial constituencies shall be readjusted. So after each census, it will be readjusted by such authority and in such manner as Parliament by law prescribed. So in this case, under this article, Parliament by law has prescribed Section 8A of Representations of People Act that it must be done by the Election Commission. So this is what it is. And secondly, so there are two parts to the delimitation. One is after every census redrawing the boundaries of the existing constituencies. This is what it provides. So this is exactly the exercise which is happening. And now, what this further provides, provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026, when people asked us, कि आप 2026 के बाद क्यों नहीं कर रहे? So this is why I am coming to the next step. Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026, so 21 census is not yet complete, and it is not any other census. It is only the census which is taken after the year 2026. It shall not be necessary to readjust. जब 2026 के बाद में सेंसस आ जाएगा, तो फिर readjustment, the total number of seats in the legislative assembly of each state as readjusted on the basis of 1971 census, it will not be necessary. The division of such a state into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of 2001 census under this law. So it is exactly what we are taking the exercise. This is strictly as per the constitutional and legal provisions in which we have no say, in which nobody has a say. So friends, विधानसभा की इस प्रकार 126 और लोकसभा की 14 सीटें निर्धारित रहेंगी और इन्हीं के भीतर एग्जिस्टिंग लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में we will only in the first place readjust the boundaries. As regards the reservation for SCs and STs, scheduled caste and scheduled caste tribes का reservation again in the constitution is provided under article 330 and 332. These are such critical things that it draws its strength from one or the other article of the constitution or the legal framework, which says that this will be done on the basis of proportion of the population of SCs and STs to the total population where their population is largest in number. So you first determine the SC/ST population and then also see where in which constituency their population is largest. And again, this is exactly in terms of section 80 of the RP Act 1950, section 9(1)(c) and D, article 82, 170, 330 and 332 of the Constitution. There were concerns about due representation of various groups and their political rights as regards the SCs, STs and others also. So as regards the suggestions of others, other than SC, STs for reservations, this is not permissible. But the suggestions and aspirations at times conflicting and competing और एक दूसरे से एक ही विषय पे अलग-अलग राय में लोगों की थी, natural है, स्वाभाविक है. We have all heard them and we have duly recorded it. And they are very constructive suggestions. We give due regard to all. And when we do the readjustments, realignment, so we'll keep in mind the principles and broad principles I am telling you now. The suggestions given by all representatives
geographical area, and different factors such as boundaries of the existing administrative units, connectivity, geographical compactness, physical features, public conveniences, etc. All these factors go, and it's a holistic view which is taken, which is in addition to the population and the geographical area. And this will be done on the basis of units administrative existing as on 1st January 2023. विधानसभा और लोकसभा का परिसमन करते समय बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के हितों पर भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 और 332 के तहत प्रदत्त जो प्रावधान है उन्हीं के अनुरूप निर्णय लिया जाए. The relevant provision also I will quote here of Article 332, which provides a specific provision for Assam with regard to autonomous districts and Bodoland territorial area district for reservation of seats in the assembly. And further, clause 6 provides, no person who is not a member of a scheduled tribe of any autonomous district of the state of Assam shall be eligible for election to the legislative assembly of the state from any constituency of that district. These are further safeguards which are provided for and specifically for the state of Assam. This provision further suggests that election to the legislative assemblies of the state of Assam, the representation of the STs, constituencies included in the Bodoland territorial district so notified and existing prior to the constitution of Bodoland tribal area districts shall be maintained. This is another safeguard. And Article 332 के तहत विधानसभा में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी सीट्स रिजर्वेशन का प्रावधान होगा. फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि इस एक दिन में 2 दिन में जो लोग हमसे मिले हैं, कुछ लोग दूरी के कारण या किसी कारण से हमारे पास ना आ पाए. But as I mentioned, that the philosophy behind the entire exercise to have a very wide and meaningful consultation, we are providing time till 15th April for anybody to give us suggestions. We have publicized our mail IDs. It can be given to CEO office. It can be even go to DC's office, who will send it to us. Any suggestion which any citizen, any group, any academic institution, any research institution, any political party, any interest group which wants to send us, it is most welcome. We assure you that we will give it very, very serious consideration of each and every suggestion which we receive. After that, now since we have heard everyone, we will firm up our guidelines on the basis of which we will prepare a draft, and that draft also will be published. And thereafter we will give 1 month's time for everyone to either accept or object or suggest or modify or whatever one wants. And after we have received in 1 month those suggestions or those changes or sujhav, we will again come back to us to give a personal hearing to the issues which arises out of the draft publication. So this is just again to explain to you how consultative, how participative exercise we want to make, and how much earnestly we want to make an effort that, and stop here for any suggestions, and you can also give us suggestions more rather than only questions. Thank you very much. So some organizations have made pertinent point pertaining to the population. They say if this incentivizes
the population growth and incentivizes the more population. So your take on that, is it possible that Commission will figure that? And can we expect the next Lok Sabha elections to be held will be on a delimited constituencies? Is there a timeline for that? You had a question here? Sir, same question, big curiosity among common people also, that will the delimitation process will complete before 2024 Lok Sabha election? आपका नाम और ऑर्गेनाइजेशन बता Pankaj दीजिए। Sharma from News Live. Sir, I have another one, so very short question. Ask कुछ me. और Go ahead. बताइए। Sir, main opposition party Congress not attended the meeting, anything that the whole process is fixing. They use the word mess fixing. Some hours before. कोई और question? I have a question to supplement the previous questions. I am here. I am Ratnadeep from NDTV. The main principal opposition party, Congress, has not attended the meeting. They have held press conferences. They have been categorically saying that there were memorandums and further communications sent, and they had been waiting 2 months for the EC to reply on those. So, EC's clarification on that. You had a question, आप लें पीछे आपके। I'm Sukrita from the Indian Express. I'm really sorry about this question, but I'm just going to request you that the point about why the 2001 census is being used, it's a little technical. If you could just break it down in a little bit of layperson language, it would be really helpful. Thank you. Okay. Sir, myself Dilbag Hussain from the Cross Line. I want to ask you, sir, in Jammu and Kashmir, the census is taken in 2011. Now, why in Assam 2001? Why? So let me take this much, and I suppose these are basically have covered all the questions. I'm Sunil from Deccan Herald. My question is, some of the parties, some of the political parties and organizations also, they raised the issue about NRC. They say that the delimitation should be carried out after the NRC process is over. So what is your take on it? So first question is about the uneven population growth in this state. See, as I mentioned, there are variety of factors which would go into the decision making, the geographical area, spread, and 2001 census, population index. Essentially, these are the parameters on which it would be based. But as I also mentioned, some groups asked for taking this aspect into consideration, and also asked for the margin and the variation within the constituencies to be increased, so as to take this factor into consideration. We have received those suggestions, but we'll take a call after studying it and after seeing the other precedents. As regards timing, generally, timing is not that we comment on, and the timing is one thing which we do not disclose either. But having said that, you will ask us, when are you announcing elections, what is the schedule, what is the timeline. So this people come to know only through the press. So we announce it straight away in the press, nobody can ever know what is the timeline. But we are very encouraged by, look at the very fact that close to 60-65 organizations, 10 political parties coming and spending time with us, and as much as time they wanted, we continue till date. And we are giving them still time. So the way the constructive suggestions have come,
it suggests that there is a understanding, there is an appreciation, there is a participation to get this exercise completed. If we continue to receive such kind of support and such kind of suggestions, we'll do our work of doing it in a speedy manner as much as required, but with extreme care. And it's a complex exercise. It has to take into account the different geographical, historical, cultural, demographic aspects. हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि that जल्दी में कोई गलती करे. So we'll reconcile all this and come within the time frame which we think would be feasible. Why 2001 again you asked? See, I would request you to read the article which I mentioned, the 170. There are two aspects to this entire exercise. One, एक तो जो constituencies already existing हैं, उनको हर census के बाद this provision provides for their readjustments. This is one part. For some reason, if that readjustment has not taken place, and last delimitation took place on the basis of 1971. So, जो आज existing boundaries हैं, उन boundaries को आप change करेंगे 2026 के बाद first census के basis पे. Until then, wherever it is remaining, the article says would be maybe readjusted on the basis of 2001 census. So that is the relevance of this particular. Now friend asked about why in J&K then it was 2011. A very pertinent question. And you may also ask, somebody asked us I forgot to mention, कि वहाँ तो delimitation commission बनाया था, यहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं बना. So the status of the number one, you should appreciate that the status of the state underwent a change. That is the first point. And the second point, the J&K Reorganization Act itself provided for a delimitation commission in 2011 to be the census base. So it is as per the Act of Parliament. I hope I am clear to the person who has asked this question. So that is the difference. Now about NRC. See, the two issues are different issues. And there is no legal bar in carrying out two processes separately and simultaneously. And there is no legal sequencing which law provides. I hope I am clear to all. So, these are two legally distinct activities, not having a legal bar or a legal sequencing, and triggers under different legislative framework. So we are well within the process of defining this based on a census figure, which is the 2001, and the trigger for us is the assignment of the deferment by the Honorable President, and thereafter under section 80 starting the census. So this I suppose answers everybody's questions. Is there? So Congress. Do we have their letters which they wrote to us and our replies? Do we have? Do we have? Yes, you mentioned it, do not repeat. We are quite, I mentioned it in Karnataka also. इस तरीके के टर्म तो हम सुनने के आदी हैं. ये कितनी ही मेहनत करें ये शब्द तो हमें सुनने पड़ते हैं. तो लेकिन इसका जवाब दूंगा मैं. तो आप डिसाइड करेंगे कि फिक्सिंग है कि नहीं है.
जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि कोई जो एक ड्राफ्ट की बात हो रही है, सर्कुलेट हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमें कोई डिक्टेट करेगा, दिस इज नेवर 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 पॉसिबल. The record of the Election Commission is not such that we take dictation from anybody, which we never take and we will never take. So let's clarify this. देखिए, एज ए कमीशन हम सभी अपने जितने भी प्रोसेस हैं उसमें हमारे दो मेन स्तंभ हैं जिस पर पूरा इलेक्शन कमीशन वर्क करता है. दो आधार हैं, दो फाउंडेशनल आधार हैं. वन इज डिस्क्लोजर, सेकंड इज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेकहोल्डर्स. आप जब चुनाव का प्रोसेस होता है, आप सब लोग तो, मैं तो उस समय भी आया था जब 2021 में आपका चुनाव हुआ था, तो भी उस समय पीक में था. हम लोग जो भी इलेक्शन का प्रोसेस होता है, वो चाहे मशीन का कहीं जाना हो, पॉलिटिकल पार्टी का जाना हो, फोर्स का एम्प्लॉयमेंट हो, रेंडमाइजेशन हो, कोई भी प्रोसेस हो, इलेक्टोरल रोल्स बनना हो, हम सबको नेट पे डिस्क्लोज करते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और स्टेक होल्डर्स को उसमें साथ लेके चलते हैं. यही दो हमारी स्ट्रेंथ है और यही दो चीज़ हमें हमारे प्रोसेस में ट्रस्ट क्रिएट कराते हैं. आप हर समय पे आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, इवन पोलिंग पे मौजूद रहते हैं, इवन काउंटिंग के समय मौजूद रहते हैं. आप देखते हैं आपकी आंखों के सामने सब हो रहा है. हम पॉलिटिकल पार्टी से सिग्नेचर लेते हैं जब मशीन जाती है, रेंडमाइजेशन होता है, पोल क्लोज होता है, शाम में कितने लोग वोट दिए उसका एक फॉर्म उनके हाथ में पकड़ाते हैं, मशीन का नंबर देते हैं, काउंटिंग के समय देते हैं. तो वही प्रोसेस इसमें भी. तो हमारे लिए सबकी सहभागिता और सबकी साझेदारी इस प्रोसेस में हमारे लिए तो बहुत अहम है. इसलिए हम इस बात को बहुत वैल्यू करते हैं और बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सभी स्टेक होल्डर, सभी पार्टी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपने सुझाव दें. मैं इतना ही कह के रोकना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा जितना करें, क्योंकि हमारी इच्छा यही है कि सब लोग हमारे साथ आएं और पार्टिसिपेट करें. और फिक्सेशन अगर हो सकता ही नहीं है, बिकॉज फॉर्मूलाज एंड बेसिस हम आपको खुद बताएंगे और उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे. कुछ फाइनल ऑर्डर तो कर नहीं देंगे. ड्राफ्ट पब्लिक करने के बाद आप हमसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया, ये क्यों किया, इसमें क्या फॉर्मूला लगाया. अगेन एज आई मेंशन, इट इज द डिस्क्लोजर, it is the participation, and it's not only participation of 1, 2, 3, 4, 5 parties, but all organizations and all citizens, सभी नागरिकों का पार्टिसिपेशन सबके समक्ष रखेंगे. You will judge yourself. So I would think I will stop it here. जहाँ तक वैसे फिर भी जनवरी में, जब दिसंबर में हमने ऑर्डर निकाला था, तो जनवरी में हमने सबसे पहले टाइम मिलने के लिए सम्मानित सदस्यगण को दिया था जो हैं, कौन से मिले थे, उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में है. मोस्टली उसमें भी मुद्दे यही थे कि 2001 में क्यों सेंसस पे कर रहे हैं, बाद में क्यों नहीं. 4-5 मुद्दे मेन थे. ये लेटर है अपने पास. एनआरसी के बात करें, पहले क्यों कर रहे हैं, डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों कर रहे हैं, यही मुद्दे कल भी हमारे सामने में और लोगों ने भी उठाए हैं. उसके बाद में हमने ये निर्णय लिया कि हमें सबको सुनना चाहिए और यही निर्णय लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि 1-to-1 सुनने के अलावा इसको ब्रॉड बेस किया है, सबको सुने और सुनने के बाद आपके माध्यम से मैंने सभी प्रश्नों के मोटा मोटी मोरलेस जवाब भी दे दिए हैं. सो हमारी सबसे अपील है और 15 तारीख तक हमारा ये प्रोसेस खुला हुआ है. जो भी हमसे समय चाहेगा हम उसको जितना समय चाहिए उतना देंगे, जितना मिलने की जगह होगी उतनी देंगे. और चाहते यही है कि इसको बहुत पार्टिसिपेटिव, मीनिंगफुल बनाएं और स्टेट के हक में जितना बेस्ट टू बेस्ट सबकी एस्पिरेशंस को इकट्ठा करके हो सकता है वो. थैंक यू. Long session, I think. Let's call it a day now. Thank you. Yeah, I want to do one thing. As a digital lover, I'm from NDU. The thing is that we know that most of the political parties, what they have said, because they have given a lot of information to the people. I guess. But just 1 minute. I would like to know what is the mainly expect the people, civil society, जो आसाम की आम नागरिक है, जो आपसे मिले लगभग
60 to 65 जो सिविल सोसाइटीज है, उन लोग का मन में क्या है, थोड़ा सा आप खुलासा करेंगे? सर इसमें मैं भी एक Please. आपने Let this be last because we have a flight also. जी सर, आपने जितना सारे लोगों को मिले हैं और हम लोगों से भी जो बात की है, तो आपको उसमें से क्या अनुभव मिलता है? Sir, not to add to that, a little different, just two things. We're getting late for the flight, please. Two very brief things. When can we expect the draft delimitation, delimited constituencies for Assam? And the second is, when the exercise is carried out throughout the country in 2026, will it be again? इसका तो सवाल सर दे चुके जवाब, please. No, you have another point in this after notices. I'll answer that also. Sir, 19 lakh people are excluded from NRC. Will they counted in delimitation? Pardon, say again. 19 lakh people are excluded from NRC till now. So they are included in they are counted, sir, in delimitation process. So now these three questions I'll answer last. Your question and my friend's question from there is a very interesting question actually, as to what a sense we get from the overall. And I'm telling it from my heart, and because this question I never expected, and I can't summarize everything. 65 representations spread over 10-15 minutes each, 600 minutes into 2-3 lines. But general जिसने भी बात की सबके लोगों में यह है कि जो पीस और एक तो अपनी उस पीस को मेंटेन करना, उसमें रहना और उसके बीच में अपने सजेशंस देकर इस एक्सरसाइज को बहुत स्मूथली करा लेना, ये एक जनरल हमें महसूस हुआ. Nobody was by and large opposed to this except these 3-4 points. ये 3-4 पॉइंट बहुत लोगों ने उठाए कि 2001 क्यों, NRC का क्यों नहीं और डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू क्यों नहीं. इसका जवाब मैंने आपके माध्यम से दिया. आई होप आई हैव बीन एबल टू सम एक्सटेंट सेटिस्फाई यू. जरूरत पड़ेगी फिर करेंगे. लेकिन सबके मन में एक एस्पिरेशनल असम, एक एस्पिरेशनल सोशो पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें पीस हो सबकी नजर आता है, एंड विच इज ए वेरी वेरी हेल्थी एंड एनकरेजिंग साइन फॉर अस. We felt very happy about it. The second thing was about 19 lakhs which you mentioned. See, as I mentioned, these are two separate activities, distinct activities. What we are going to do is on the basis of the population of a particular year base. So if that population was there in the census, it will get counted. These are two different aspects and distinct aspects. After 2026 and after, as I read that it will be the census after 2026. First census, I read that again for you. Provided that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026. So, and at that stage, even the numbers would be decided. Right now, I said there are two stages. One is the reorganization of the existing system within the 171(3), and then that is the second exercise. And it's a little early to say because the 21 census is not yet complete. When would it happen? When would it come? All that are in at the moment in a speculative. I don't know. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. सर, असम को छोड़ के एक सवाल है सर. अगर किसी सांसद की सदस्यता कानून के तहत लोअर कोर्ट के जजमेंट के बाद रद्द किया जाता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल रहता है और कब तक चुनाव घोषणा हो सकती है? आज जिसको डिलिमिटेशन पर रोकते हैं उससे संबंधित जवाब आपको दे चुका हूँ. इसका भी जवाब सही समय पर देंगे, बट आज इस पर थैंक यू वेरी मच. It was a real pleasure.